जिस मीडिया संस्थान को मोदी सरकार की आंखों का तारा कहा जाता है, जिस एजेंसी के बिना किसी भी सरकारी योजना की तस्वीर अधूरी मानी जाती है, उसी एएनआई को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एएनआई से जुड़ी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मीडिया कंटेंट को हटाने की मांग की गई थी। पर यह सिर्फ एक याचिका नहीं थी, ये मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की भूमिका और न्यायपालिका की सीमाओं से जुड़ा है। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं तथ्यों, तर्कों और लोकतंत्र के मूल्यों के साथ। एएनआई कौन है और क्यों है इतनी विशेष? एएनआई यानी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल भारत की सबसे बड़ी मल्टीमीडिया न्यूज़ एजेंसी। लेकिन पिछले एक दशक में एएनआई सिर्फ न्यूज़ एजेंसी नहीं रही, बल्कि यह सरकार की सबसे भरोसेमंद प्रेस रिलीज एजेंसी बन चुकी है। पीएम मोदी के भाषण सबसे पहले एएनआई पर आते हैं। मंत्रीगण के इंटरव्यू एएनआई को ही दिए जाते हैं। सरकारी उपलब्धियों की हर फुटेज सबसे पहले एएनआई के कैमरे में रिकॉर्ड होती है। राजनीतिक विश्लेषक एएनआई को सरकारी प्रचार तंत्र तक कह चुके हैं। ऐसे में तब एएनआई से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और खारिज कर दी गई। तो क्या अदालत ने एक पसंदीदा मीडिया को उसकी सीमा दिखा दी है? मामला क्या था और याचिका किसने दायर की थी? मामला ये था कि एक व्यक्ति ने कोर्ट से अपील की थी कि एएनआई और कुछ अन्य मीडिया हाउसेस को निर्देश दिए जाए कि वे उनके खिलाफ छपी खबरों को हटाएं। व्यक्ति ने दावा किया कि इन खबरों से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। याचिका में यह भी कहा गया कि अदालत को मीडिया को निर्देश देना चाहिए कि वह ऐसी सामग्री को हटाए। लेकिन अदालत ने इस अपील को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि यह कहकर खारिज किया कि मीडिया से खबर हटाने का निर्देश देना अदालत का काम नहीं। यह बयान सीधे सीधे भारत की न्यायपालिका की मर्यादा, उसकी सीमाओं और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्यों है इतनी अहम? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में दो बातें साफ थी। अदालतें मीडिया की खबरों को सेंसर नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति किसी रिपोर्ट से आहत है तो उसके पास अलग कानूनी रास्ते हैं, जैसे मानहानि का मुकदमा। यह टिप्पणी साफ संकेत देती है कि अदालतें पत्रकारिता को कंट्रोल करने का माध्यम नहीं बनेंगी, चाहे वह सरकार के करीबी मीडिया संस्थान हो या विपक्ष के समर्थन पोर्टल्स। मीडिया की आज़ादी बनाम सरकार का नियंत्रण। ये फैसला ऐसे समय में आया जब भारत का मीडिया कई वर्गों में बंट चुका है। एक और गोदी मीडिया जो सरकार के पक्ष में खबरें दिखाता है, दूसरी ओर स्वतंत्र पोर्टल जो सरकार से सवाल उठाते हैं। एएनआई का नाम हमेशा उस खेमे में है जिसे सरकार के सबसे करीब माना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एएनआई से संबंधित याचिका को खारिज किया तो यह एक संदेश था कि सरकार के करीब होना आपको कानून से ऊपर नहीं बताता। डिजिटल युग और मीडिया की जवाबदेही। आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां एक खबर 5 मिनट में वायरल हो जाती है। किसी के खिलाफ कोई भी आरोप बिना पुष्टि के ऑनलाइन पोस्ट हो जाता है। इसलिए अदालत का ये कहना है कि मीडिया से खबर हटाने की बजाय अन्य कानूनी उपायों का सहारा लिया जाए। एक बहुत संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। मीडिया की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन फेक न्यूज़, ट्रोल आर्मी और डिजिटल मानहानि का इस दौर में जवाबदेही भी उतनी ज़रूरी है। एएनआई की छवि को झटका या सुधार का मौका। इस फैसले के बाद एएनआई के लिए दो रास्ते हैं। या तो वह अपनी सरकारी चैनल वाली छवि को और मजबूत करे, या फिर वह साबित करे कि वह एक पेशेवर, निष्पक्ष और जवाबदेह न्यूज़ एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एएनआई के लिए एक आईना है कि उसे अपनी संपादकीय नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उदाहरण।
यह फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी राजनीतिक प्रभाव में नहीं आया, जबकि आलोचक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि न्यायपालिका पर सरकार का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन इस फैसले से कम यह संदेश गया है कि न्यायपालिका सरकार की पसंदीदा संस्था की बात भी नहीं मानेगी अगर वह संविधान के मूल्यों के खिलाफ हो। लोकतंत्र में संतुलन की सीख। इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या सीख मिलती है? मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन जवाबदेह भी। सरकार को मीडिया का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं, जानकारी देने के लिए करना चाहिए। न्यायपालिका को संतुलन बनाए रखना चाहिए, ना तो बहुत हस्तक्षेप, ना ही पूरी चुप्पी। जब सुप्रीम कोर्ट एएनआई जैसी संस्था को भी उसकी सीमा बताता है तो जनता के भीतर भरोसा जागता है कि संविधान आज भी जिंदा है। आपका क्या मानना है? क्या मीडिया को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वह किसी भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सके, या फिर मीडिया पर नियंत्रण का मतलब अभिव्यक्ति की हत्या है? I'll first read out the conclusions. Then let's refer to one of the paragraphs of the judgment. Accordingly, the questions of law referred to are answered by stating that the court has limited power in Section 34 and 37 of the 1996 Act to modify the arbitral awards. This limited power may be exercised under the following circumstances. 1. Where the award is severable by severing the invalid portion from the valid portion of the award as held in Part 2 of our analysis. 2. By correcting any clerical, computational, typographical errors which appear erroneous on the face of the record as held in Part 4 and Part 5 of our analysis. Post-award interest may be modified to, in some circumstances as held in Part 9 of our analysis. And or Article 142 of the Constitution applies, albeit the power must be exercised with great care and caution and within the limits of constitutional power as outlined in Part 12 of our analysis. There's a slight difference of opinion between the majority and Justice Vishwanathan, and Justice Vishwanathan will read out that. This judgment approaches the issue by maintaining the conceptual distinction between modification and severance. Whenever modification is discussed, it is to examine whether a Section 34 court can change, vary, or qualify an award. Whenever severance is discussed, it has to be understood to mean to separate and disjoin. Parties have also canvassed arguments based on the distinction, while the rival parties were daggers drawn on the aspect of the power to modify in the Section 34 code. There was unanimity on the power to sever, subject to conditions compatible with severability. After discussing, setting out the arguments and the ecosystem of arbitration, particularly Section 5, the overarching note of restraint in judicial intervention as set out in Section 5, the proscription for intervention set out in Section 13.5 and 16.5, the range of options under Section 33 for the parties and the arbitrator to carry out repairs to the award in the manner set out therein, the limited option to seek recourse to set aside on prescribed grounds with the shackle within inverted commas only if in Section 34.2 and the further safety valve available in Section 34.4 to go back to the arbitrator under circumstances mentioned therein are clear pointers about the acutely circumscribed nature of the power in the Section 34 code. This viewed in the background of the fact that parties have with open eyes contracted to go for arbitration and subject themselves to the parameters prescribed in the Act after ousting the normal judicial process clearly indicate that parties were conscious of the limited role for the courts in the review of the arbitral awards. The absence of express powers to modify for a court hearing objections against the award when such a power existed in the Precursor Act also points to the legislative intent. It is in this background that the arguments of the parties clamoring for reading into of the power of modification needs to be tested. Thereafter, case laws have been discussed, arguments have been dealt with. The argument that absurdities will result and hardship will be caused if power to modify is not read as no merit. There are at least two compelling reasons to hold so. The Arbitration and Conciliation Act in Section 43.4 itself contemplates that on the setting aside of the award, the option is to commence proceeding, including arbitration with respect to dispute. The lawmakers are fully conscious of the situation that setting aside of the award will result in the dispute continuing to be thrown open at large, since notwithstanding the setting aside of the award, the legal position is that the arbitration agreement survives
except in situations where the order setting aside has findings impinging on the validity of the arbitration agreement itself. And hence, recommencement of proceedings, including arbitration proceedings, wherever legally maintainable, being expressly contemplated in the statute, the same cannot be brushed aside on the grounds of causing hardship to the parties. Parties will no doubt have all contentions open. The second reason is equally compelling. As briefly discussed earlier, when parties agree to arbitrate, they consciously with open eyes agree to step out of the normal judicial process and submit their dispute to a third party. Parties then are also conscious that when they agree to arbitrate, their rights and liabilities will be governed by the regulating act, which is the Arbitration and Conciliation Act. In that sense, there is a contractual ouster subject to the terms of the Arbitration and Conciliation Act or the normal judicial process, and the said course of action is sanctified under Section 28 of the Contract Act. Thereafter, we have contrasted it with the appellate power of the Civil Procedure Code and how the powers are different. In view of this, the Section 34 Code, unless expressly authorized by law, cannot modify or vary the award, since it will be tantamount to exercising the powers of a merits review when parties have contracted to have their disputes referred to a third party outside the normal judicial process for adjudication of arbitration. Then we have dealt with the various arguments about lesser power. We rejected all of them. Dealt with party autonomy, not reading all of them. From the reasons stated in the earlier part of the judgment, it is crystal clear that the court's exercising powers under 34, which will include the appellate hierarchy, cannot change, vary, or qualify arbitral awards, as it strikes at the very core and root of the ethos of the arbitration process. Such an excess of power will derogate from the core aspects of the Arbitration and Conciliation Act and will breach a preeminent prohibition in the Act. In view of this, my finding, which is the first point of difference, is hence in matters arising out of Section 34 of the ANC Act, this court will refrain from exercising powers under Article 142 in view of the law laid down in SCBA and Shilpa Shailesh. I have also said that it will lead to uncertainties if such a power is reserved at the very end in the litigation process. The other aspect where I have disagreed with the opinion of the learned Chief Justice is on the power to interfere with the post-award interest. I have taken the view that the power option is to remit the matter under Section 34(4) to leave the arbitrator to do the correction. And I have also flagged the concern raised at the bar that it could result in complication in enforcement of awards internationally, because there is a conceptual distinction between enforcing a foreign judgment and enforcing an award. And I have since had the benefit of reading the judgment of the Honorable Chief Justice. In my judgment, I have independently given my reasons on each of the issues arising herein. The judgment of the Honorable Chief Justice grants power to the Section 34 Court to modify the post-award interest. I am not able to agree with the said view for the reasons stated herein above. Equally, the judgment of the Honorable Chief Justice permits the excess of power under Article 142 of the Constitution to modify the award, though it has been stated in the judgment that the power must be exercised with caution. Here again, I am not able to agree with the said view for the reasons stated in my judgment. Conclusion: the court exercising power under Section 34 and the courts hearing appeals thereunder have no power to modify an award. The power to modify is not a lesser power to that of the power to set aside, as the two operate in separate spheres and are not of the same genus. The inherent power under Section 151 CPC cannot be used to modify awards, as it will be contrary to the express powers mentioned in Section 34. Similarly, there is no scope for applying the doctrine of implied powers to modify the award. Article 142 of the Constitution will not be exercised by the court to modify awards caused by arbitrators, as is well settled that the Article 142 power cannot be used to give a go-by to any substantive statutory provision. Interest awarded also cannot be modified in excess of powers of setting aside, and the course of action under 34(4) will have to be adopted as discussed in the judgment. Hakim Supra is not per imperium insofar as it held that Section 34 Code cannot modify the award. It will be read with only the exception made in the judgment now. On the principle of actus curia nevenum gravavit, computation, clerical and typographical errors or other errors of similar nature is permissible to be corrected by the Section 34 Code. Kirari Malik does not lay down the correct law insofar as it holds that the request under 34(4) to the court by a party to grant an opportunity to the arbitral tribunal to resume proceedings or to take such other action as to be in writing. Even an oral request under 34(4) can be entertained by the court. The power under 34(4) can be exercised by the court suo motu also under the circumstances set out here and above.
A court under section 34 and the courts hearing appeals thereafter have the power to sever parts of the award in excess of the powers of setting aside awards under 34. However, while severing, the parameters set out here and above and flowing from the judicial precedents discussed therein have to be followed. And answers to the reference have been given. Appreciation is recorded for the painstaking efforts put in by the learned Solicitor General and all the learned senior counsels who addressed arguments, and also to the teams assisting them. The reference is disposed of in the above terms. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।